जय भारत। क्वाड्रिलियन क्वाड्रिलियन यूनिवर्सल काल का गुड मॉर्निंग, नमस्कार एवरीवन। जय भारत। मैं सभी को नमस्कार करता हूँ भारत की ओर से, अपनी ओर से, विश्व की ओर से, कालका की ओर से। क्वालिटी सिटीजन टाइटल आज की टॉक का। अगेन इट इज अ सीरीज ऑफ क्वालिटी इन citizenry of this country. And sometimes I change titles keeping average what is required. In fact, today it's different title, though it's me is saying, and this is those citizens if cannot understand power of citizens in Bharat India, none can change this nation to be a power in world. One has to be qualitative to make Bharat India a world level community. And if saying totality, I have file here which reads, I can read file here, and that is those citizens, as I said again, stop thinking. Now, those citizens, if cannot understand power of citizens in Bharat India, none can change this nation to be a power in world. One has to be qualitative to make Bharat India a world level community. Think on and do it. Open eyes and minds. Stop thinking that citizens are slaves to politicians, because all citizens are owners of this nation. Citizens must understand that they are self leaders of this nation because they elect constitutional representatives by using power of adult suffrage or so-called power of vote. Constitution means vote only power. Keep in mind that vote can kick out and bring in whomsoever citizens intend to see in parliament and state assemblies. Use minds and not emotions to make Bharat India great developed nation. Do not believe just in political speeches but only facts that are visible on grounds. वो नागरिक इस देश के जो समझ नहीं सकते कि भारत इंडिया क्या है, इस देश को कोई चेंज नहीं कर सकता, बदल नहीं सकता इस विश्व की शक्ति बनाने के लिए। हर व्यक्ति को, हर सिटीजन को क्वालिटेटिव होना पड़ेगा भारत इंडिया में। अगर आपको पूरे विश्व की कम्युनिटी बनना है, हिस्सा बनना है, सोचिए और कीजिए। आंखें खोलिए और मस्तिष्क को खोलिए। सोचिए मत कि हम राजनीतिक लोगों के स्लेव्स हैं, गुलाम हैं। हम गुलाम नहीं हैं उनके। हम इस देश के नागरिक हैं। हमारे देश के नागरिकों को ये समझना होगा, समझना चाहिए, करना होगा कि वो स्वयं ही इस देश के नेता हैं, क्योंकि हम लोग अपने संविधानिक नुमाइंदे को चुनते हैं, प्रतिनिधि को चुनते हैं अपनी वोट की शक्ति को खर्च करते हुए। हमारे संविधान का मतलब है वोट ओनली पावर, केवल हम एकमात्र शक्ति सिटीजन को, और वो है वोट। हमको माइंड में रखना होगा कि वोट किसी को भी पावर से बाहर कर सकता है और किसी को भी पार्लियामेंट में और स्टेट असेंबली में भेज सकता है। इसीलिए माइंड का प्रयोग कीजिए, मस्तिष्क का प्रयोग कीजिए, भावनाओं का प्रयोग मत कीजिए इस भारत देश में, जो कि एक बहुत बड़ा नेशन है, विकसित नेशन। कहने को हमारे देश से ज़्यादा विकास कहीं नहीं हुआ, लेकिन हमें अभी भी विकसित नहीं कहा जाता। कोई बात नहीं है, मत विश्वास कीजिए पॉलिटिकल स्पीचेस में, परंतु जो सच्चाइयाँ हैं, जो फैक्ट्स हैं, वास्तविकता है ज़मीन के ऊपर, उसमें आपको विश्वास रखना होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई वांटेड टू टेल, because when I talk of vote quality of citizen, it is something very different. We can talk of quality of material, quality of product, we can talk of quality of whatever. And when we talk of quality of a citizen, it is not some article, it is not something or substance or material, it is human being, it is intellect, it is thought, it is contemplation. We have to think about. हर रोज एक ही बात तो नहीं कर सकते, हम कर भी नहीं रहे। हम तो जो सोचते हैं वो बोलते हैं, हम लिखते नहीं हैं। सोचते हैं जो बोलते हैं। वो एक्सपीरियंस ही क्या है जो सोच ना सके, वो व्यक्ति ही क्या जो इंटेलेक्ट ना रख सके। One has to keep intellect. Education teaches that, experience teaches that. If I am equipped with experience, I must have certain background. I should have a lot of thinking. It's not simply somebody said to me do this and I don't know. I have to think. And thinking is very important. जो सोच नहीं सकता उसे कैसे इंटेलेक्चुअल कह देंगे आप। देखिए, दो बातें होती हैं, या तो आप प्रेयर करते हैं और या आप अपना काम करते हैं। प्रेयर करने में कोई माइंड नहीं लगता, प्रेयर करना एक विश्वास पे जाता है, लेकिन काम करने में विश्वास नहीं लगता, माइंड से काम होता है। जहाँ भी सोचने की आवश्यकता है सोचना पड़ता है।
आप ये कह सकते हैं, आप या तो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं या कविताएं पढ़ते हैं। अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो आप इंटेलेक्चुअल हैं, आप कविताएं पढ़ते हैं तो आप भक्त हैं, आप ये कह सकते हैं। मतलब वो डायरेक्ट नहीं है, लेकिन कुछ हद तक मतलब वही है। आजकल भक्ति बहुत चलती है दुनिया में, हमारे देश में स्पेशली। ये उसके भक्त हैं, वो उस भक्त हैं। हम किसी के भक्त नहीं हैं, हम तो उसके भक्त हैं जिसने हमें भेजा इस ज़मीन पे। और वो भी हम फॉर्मली नहीं कहते, ना हमें कहना चाहिए। हमें इस ज़मीन पे आए हैं कुछ काम करने के लिए, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमें क्या काम करना है। जब हम आए थे हम सब जानते थे, जब एंट्री ले रहे थे, यहाँ वहाँ से वीज़ा ले रहे थे एग्जैक्ट इस प्लेनेट पे आने के लिए, यहाँ आते आते हम सब भूल गए, क्योंकि हम खाते पीते मस्ती मारते आए, 9 महीने 10 महीने ट्रैवल किया और उसके बाद आराम से बाहर आए। और कुछ समय लग गया हमें अपने होश में आने में, जब तक हमारा माइंड काम करता हम सब भूल गए, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं था। We forgot everything. Everybody forgets whatever was given to you by your card or start card. You can say, if you talk in safety language, start card given to everybody. You have to go and do this work, and that is what safety technique is. And that safety was for this world, and that safety was for this world maintainable quality by every citizen. And I'm talking of this country now, Bharat India. So whoever came here, of course, has been fortunate, but that fortunate is spiritual of soul, not of scientific or required one. We have to realize this fact. It is not very difficult to be qualitative, and it's not very difficult to move further. You see, a person who can initiate its own actions without support from others, that person is called proactive in general language. Oh, see, this person is proactive means that person knows how to prepare background, how to collect information, and how to start work. A person without telling by seniors or others who can start work on his own is called proactive, and who can plan on his own, who keeps busy so that work be done in advance, at least preparatory works or homework be done in advance, so that we can move further and further. This happens in life, and particularly life of every country. But I'm talking of life in this country. मैं बात कर रहा हूँ भारत इंडिया के देश की, जहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, 140 करोड़ या 130 करोड़ या 1300 million or 1400 million, whatever we can call it. It's more than required, you can say redundant it is, but we have to stop redundancy, and we have to use this power of humanity, power of humanity or various communities or citizenry of this country. It's a wealth indirect, that's not direct wealth. इनडायरेक्टली एक शक्ति अगर इसका इस्तेमाल किया जाए, हमारी ये प्रॉपर्टी है, इसको इस्तेमाल किया जाए, हमारा, हालांकि हम ऑनर नहीं है इसके, लेकिन क्योंकि हमारे पास ये शक्ति है तो काम कर सकती है, हर क्लास की शक्ति, वर्कर्स की शक्ति, और आप कह सकते हैं वो लोग जो बहुत पढ़े लिखे अपने आप को कहते हैं उनकी शक्ति, प्रोफेशनल्स की शक्ति, और आम लोगों की शक्ति हमें बहुत आगे निकाल सकती है। लेकिन वो तभी हो सकता है जब हम किसी स्टैंडर्ड सिस्टम में रह के काम करें। आजकल सिस्टम्स को तो ब्रेक कर दिया जाता है, अपने आप काम करना चाहते हैं लोग अपने हिसाब से, हमें उसमें भी कोई गलत नज़र नहीं आता अगर काम का रिजल्ट आए तो, और रिजल्ट नहीं आएगा तो सब बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। We have to be very serious about this case, and that is the reason that I talk of quality of citizenry, or quality comes from indication what sort of person one is or who are, how do you, what is your method of voting, what is your thinking, means to whom you want to vote. I'm not saying you vote to whom or don't vote, it's up to you. No one is forcible, no one has any relation in this case, but everybody wants to see country developing, country advancing, education good. You can say, if we don't have good education, we don't have good health, we don't have good public utilities, then how can we say that we are going to be advanced? It's all reliable, or you can say non-reliable statements. These statements do not provide anything except state of delusion, perplexion. I don't want to say that, but it is a fact. In our country, faith dominates in majority of people. In our country, facts are not considered because facts require knowledge, facts require application of time, and facts are significant one.
which can be quality fact, time fact, cost fact, or many other facts, where workers do work, believing something, and that they would get returns of that. उनको फ़ायदा होगा, सब सोचते हैं काम करेंगे तो। लेकिन काम करना और काम सही करना दो अलग अलग बातें हैं। आपने काम कर दिया, मैंने काम कर दिया, बहुत जल्दी कर दिया, अब पता लगा कि आपने मेजरमेंट गलत कर दी उसकी, उसके अंदर डिफेक्ट्स थे मटेरियल में, वो आपने डुबो दिए, आप उसको रिमूव करना भी नहीं जानते। ऐसी बातें होती हैं। हम इस देश के वासी हैं, हम इस देश के सिटीजन हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, हम इस देश के प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, मैनेजर्स हैं, जो भी हैं। सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी, उत्तरदायी उन लोगों का है जो प्रोफेशनल्स हैं। वो चाहे इंजीनियरिंग के प्रोफेशनल्स हों या मेडिकल साइंस के प्रोफेशनल हों, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले आती है, क्योंकि वो एक्सपर्ट्स हैं अपने काम में, और वो प्रॉब्लम को आने से पहले भी एंटिसिपेट कर लेते हैं। So my dear professionals, you are actually pro leaders, proactive people who can change society if you do not have monetary interests only. I have seen many people who got monetary interest. They don't believe in cash even. They want all facilities without doing anything. They don't care for that. That's the reason I'm talking about. You may be rich, you may not be rich, doesn't matter. You may be intelligent or you may not be intelligent, it matters. You have good knowledge, it matters. You have good understanding, it matters. You have good quality, it matters. All these matter. All these matter. पर मैं क्यों कह रहा हूँ ये? कुछ लोग कहेंगे यार रोज बैठ जाता है, पता नहीं क्या क्या बोलते, तो बोर हो गए, हम तो थक गए इससे। आप सही कह रहे हैं, आप थकेंगे, क्योंकि जो बात मैं कर रहा हूँ क्वालिटी की, वो बात बहुत मुश्किल है, क्योंकि क्वालिटी हम भूल गए हैं। क्वालिटी हम भूल गए हैं और हम चाहते हैं अपने आप आ जाएगी क्वालिटी, हमें खड़े होने की या उसको अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा लोग सोचते हैं। बट दैट इज़ नॉट a right statement. I know this statement must have been collected by our mate, but mate collected this for purpose of disposal. It doesn't mean we should keep it at another place and wait for people to come. I didn't find any people. I I checked that body, and we had to dispose it. And that's the reason then we have to inform. But information also is not realized in these days. Everybody thinks that he is only person to solve problems. And fact remains that no one can solve problems. They can create problems. That's what very significant part of talk is. Quality says it should be, it must be, it would be. That is assumption. But for that, lot efficiency is required, lot attention is required. Keep a watch on all activities required. Cooperations from everybody is required. In fact, when we talk of food, we talk of other items. We have to consume all items as such. No difference. We have to check our people whom we propose to lead this country, governance wise, legislative wise, and of course, support to all other efficiencies, all other, you can say, controls and universes. We have to depend on self study, self examination. It is very difficult, I understand. मैं समझता हूँ कि आसान नहीं होता करना कि आप सब कुछ करेंगे अपने आप, लेकिन अगर आपका माइंड शार्प हो जाए, आप आगे चलने के लिए स्वयं तैयार हो जाएं, आप ये ना देखें कि मेरे साथ कौन आ रहा है, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। हो नहीं सकता सक्सेस ना मिले, हो सकता है आपके हिसाब से कुछ परसेंटेज में वेरिएशन आ जाए, लेकिन फिर भी शक्ति तो आपको मिलेगी। इम्पोर्टेंट पॉइंट, एंड एवरीबडी शुड बी बिहाइंड दैट, हाउ टू एक्सट्रैक्ट दिस एनर्जी फ्रॉम एनवायरमेंट, because it is for you, you want to use it, so you have to do all this.
You have to do all this. This is very significant one. One cannot run away. That is also a fact. But they are running away. My dear friends, citizen, again I say, is top power in constitution of this country. And constitution of this country is brilliant document, I can say. I have gone through this document superficially, of course, because I'm not professional in law field, but I, wherever I pages, I move on. Find various new definitions, various new photos, and so on. We can say a thick volume of more about I can say less than 1400 pages. It will be more than that in coming a couple of days. So, my dear friends, quality as we consider, we cannot get quality in works. We cannot get quality in projects materials. We cannot get quality in working on houses, internal and external, and we cannot guarantee that we have it. Our system was organized by my father, means our one, our our requirement, after that others requirement, and our objective is to keep house clean and with good safety, or you can say good thinking, good enjoying. All these are delivered to you without any delay. बोलना आसान होता है कि हम क्वालिटी दे रहे हैं, बोलना बहुत आसान है, लेकिन जब वो देखते हैं कि आदमी चुपचाप लेना चाहता है, बात नहीं करना चाहता, इसका मतलब क्या है? मतलब यही है कि हम क्वालिटी की तरफ ध्यान नहीं देते, यहाँ तक कि हम लोग तो सिस्टम्स की तरफ भी ध्यान नहीं देते। जो क्वालिटी के सिस्टम है उस पर भी अगर ध्यान दें तो काफ़ी कुछ सक्सेसफुली गेन किया जा सकता है। ये ज़रूरी है। अगर हम वो गेन करें तो हम अपने आप को भी, अपने देश को भी अपने आगे से ले जाकर दूसरी कंट्री में छोड़ सकते हैं, ताकि वो आत्मा जो हमारे पास थी वो साफ रहे। साफ रहना बहुत आवश्यक है। इट मस्ट बी क्लीन। I'm talking of engineering because I'm from civil engineering, and civil engineering got common sense and soul path connected together between those two opposite sex persons. When these two mix together, you may say some kind of submission, some kind of operation is required to be done, and it has to be done. I know that you are not a police. So, my dear friends, quality cannot be taken for granted. You have to check your own quality, citizens' quality, family quality, parents' quality, neighborhood quality. Quality is something expressive, something to understand, something to feel, just like we say, I don't want to be dishonest. What does it mean? That I am honest, I want to maintain my honesty, and it is not wrong. Rather, it is better than not to think about. I thought a lot on quality. You have also to think a lot, because without your thinking, you cannot meet what is expected of. You cannot find what is expected of. क्वालिटी से आपको चैन मिलेगा अगर आप प्राप्त करेंगे, क्वालिटी से विश्वास मिलेगा कि सामान बिक ही जाएगा, और क्वालिटी से आपको कॉस्ट कंट्रोल भी मिलेगा, और बहुत से प्रोफेशनल टाइटल्स मिलेंगे जिनको मैंने लिखा है अपने नोट में, पढ़ सकते हैं। Or we people of India solemnly resolve, like first sentence, and then we have this. uh, we want to see country march, but country cannot march ahead without every citizen conducting quality in a professional way. Quality's absence, of course, raises my head. Where I am living, why I am living, what's purpose?
but who can listen? Or you understand? We listen together. You understand that? We have to listen or we have to speak. If we have to speak, we have to prepare before delivering talk, because you have to see what sort of people are there who would participate in debate otherwise, and we have to think of only that area which is covered under our scrutiny of quality. क्वालिटी समझना और क्वालिटी करना अलग अलग बातें हैं। एक बार प्रोसीजर बना दिया कि क्वालिटी हम ऐसे लेंगे इस काम में, और वो प्रोसीजर आपने पूरा करके उसको स्विम करा के भी देख लिया, तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ऐसी बात होगी। नींद नहीं आ रही, लेकिन आलस तो आता है। सुबह सुबह का समय है। मैं चाहता था कि मेरी बात सब तक पहुँचे, और अच्छी बात है, पहुँचनी चाहिए। नुकसान क्या है? हम कोई गलत बात तो कर नहीं रहे। हम देश के लिए बात कर रहे हैं, विश्व के लिए बात कर रहे हैं, और विश्व के लिए बात करना है, देश के लिए बात करना, किसी को गुस्सा क्यों आए, मेरी समझ से बाहर है। हर व्यक्ति को, हर सिटीजन को अपनी पावर जो उसके पास है उसको सही प्रयोग से लाना चाहिए, सही तरीके से उसके अंदर पानी आना चाहिए। तभी हम समझ सकते हैं कि हम किस लेवल तक आगे जा सकते हैं। अभी तो हमने स्टार्ट ही नहीं किया है। किस लेवल की बात हम करेंगे, स्टार्ट नहीं किया है, और स्टार्ट होगा अवश्य, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ देर जरूर होती है, ये मैंने देखा है। हम लोग टाइम के पंक्चुअल नहीं है, वर्क के पंक्चुअल नहीं है, सोच के पंक्चुअल नहीं है। नहीं हुई तो नहीं हुई, कोई बात नहीं है। हो गई तो फिर उसको दूसरी तरह से आपको भगाना चाहिए। Sometimes it is very important to tell people about how they do, what is their responsibility, what is their duty. A quality person should understand all this. A quality citizen should understand fundamental rights, fundamental duties, general duties, and what is relation, what details do exist in converting both to one. So it is temporarily, but it is solved, and we cannot control solve directly. Yes, we can suppress, we can skill, we can hang on, and we can do everything. If you want to have quality, you have to start thinking, you have to start doing, you have to think, and when you continuously think, then your hunger for coordination increases, your hunger for learning increases, and that hunger is actually exposed quality material for you. Whatever you eat in your life, you have to feel happy, and if you are happy, you have to be happy. Nobody should say no. भागना बहुत आसान होता है। लोग भागते हैं, भाग के दिखाते हैं कि देखो हमारी क्वालिटी कंट्रोल हो जाएगी। होता ये है, वो ऐसे नहीं होती। अब भागे, अच्छी बात है, भागने को कौन मना कर रहा है? हम तो मना कर ही नहीं रहे। आई एम जस्ट ट्राइंग टू से दैट टू अचीव क्वालिटी, citizen has to investigate self, and not only one citizen, there can be many more citizens as well. सिटीजन को ये शक्ति है कि वो किसी को भी पकड़ सके। पकड़ता है, लेकिन क्या करेगा? तो आपको दवाई नहीं मिलेगी। क्वालिटी लाना बड़ा आसान है। मैं इंजीनियरिंग में बात करता रहता हूँ, इंजीनियरिंग की वेबसाइट्स पर, और अच्छा लगता है बात करना। खराबी क्या है? अरे बात करेंगे तभी तो समझ आएगा, बात ही नहीं करेंगे तो समझ क्या आएगा? क्वालिटी लाना हर एक की ड्यूटी है। सिंपल सी बात है, हर एक की ड्यूटी है। छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो, छोटे बच्चे को तो समझाया जा सकता है एक उम्र के पहले पहले। उसके बाद तो उसको भी बड़ा बच्चा ही कहना पड़ेगा, क्योंकि वो अब खेल में इंटरेस्ट नहीं रखता। पार्क में, गार्डन में जाने में या कहीं और जाने में बहुत इंटरेस्ट रखता है।
क्वालिटी मदर फादर की भी देखी जानी चाहिए, क्योंकि जो क्वालिटी मदर फादर की होती है वो पहला इंजेक्शन वही है। बच्चा अपने घर में देखता है माँ कैसे कंडक्ट करती है, पिता कैसे कंडक्ट करते हैं, और मुझे कैसा कंडक्ट करना चाहिए। बहुत कहने को छोटा सेंटेंस है, लेकिन बहुत बहुत लंबी, बहुत दूर तक जाने वाली, क्योंकि सिस्टम जो रखता है उसे याद किया जाता है, जो सिस्टम बनाता है उसको उससे ज़्यादा याद किया जाता है, और उस सिस्टम को सोचता है कि मैं इसका मालिक हूँ, तो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। एक तरह से सेक्रीफाइस अपने मॉडल के लिए चाहिए। क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, दैट इज डिफरेंट। क्या कहा जा रहा है, दैट इज क्वेश्चन, दैट इज टू बी इन्वेस्टिगेटेड। I may speak anything, I may not commit, I may come down. What purpose my poem has been? No purpose, no purpose at all. If we elect our representatives and they don't work for us, what's the purpose of those representatives? That is self-question. Citizen may be poor, may not have purchasing power, but what representatives are doing, that is another point of view. Because we respect everyone in this country, we have to respect, and if we respect this way, I can say that something is wrong somewhere. No problem, I'll continue, I have to continue. It's very significant that we have to continue all such types of discussions, and that too in direct class. And if I don't do that, I don't have power to eliminate bad quality. You can say eliminate bad quality and replenish that by good quality, good system, technical system, approved system, whatever can be observed, whatever can be pursued. That's what I say. That's why क्वालिटी को मानना किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन क्वालिटी को और अच्छा बनाना हर एक के हाथ में है, अगर आपका हर एक व्यक्ति आपकी इस बात को समझता है। सब समझता है, सब समझता है। One understands everything. That's where my system lies. कहने को हम कह देते जी मेरा सामान खरीदे बहुत अच्छा है, अच्छी बात है, आपको अपना सामान को बेचने का अधिकार है, आपको पैसे लेने का अधिकार है। तारीफ झूठी और सच्ची और तारीफ होती है। वो ऐसा घुमा देते होंगे माइंड कि आप उस बारे में सोचे न क्या होता है। नहीं सोचेंगे तो गलत भी कर सकते हैं, ये भी पॉइंट साथ में है। उस शक्ति को देने से क्या फायदा है। आसान यही है कि हम लोग बात को समझें। ट्राई टू ग्रैस्प एवरीथिंग, इफ यू कैन नॉट then it's a mistake. We have to do that. Direct communication, frank communication, not simply communication but explanation. All these are very much appreciable in quality system. No problem if I don't have a religion book or Shakespeare book or other books. You should be strong enough to like like really astonishing it is. I cannot say. अचंभा लगता है कई बार हम क्वालिटी की बात कर जा रहे हैं लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। हाँ हाँ, सुबह के अल्टीमेटली 3:30 या 4 होने वाले हैं, तो कौन इंटरेस्ट लेगा आपकी बात में। अगर आप दिन में भी करेंगे, क्योंकि आपको चाहिए मसाला, मसाला लड़ाई का, मसाला डायलॉग्स का, आपको चाहिए गाने, तो आपकी जो सोच है वही तो कॉपी हो रही है ज़मीन पे। कॉपी ना सही वॉलंटरी हो, कोई भी रीज़न रहा हो, तो वो तो करना ही पड़ेगा आपको। जब भी कहा जाएगा क्वालिटी के बारे में, किसी ने बोला क्यों नहीं, तो उस टाइम बड़ा दुखद समय होगा।
जब हमारे पास इतने यंग जनरेशन के पढ़े लिखे लोग हैं जो क्वालिटी को समझ सकते हैं, जीवन में बोल सकते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, ये भी सच है। दैट क्वालिटी सिस्टम वी मस्ट अंडरस्टैंड, we must analyze, and we must create our own. It is not necessary what institution says I have to do. I can do anything else. Rajesh, I can say we can say something with priority. We cannot say because lack of experience gives you nothing. You may fight at that time. You can fight now. Quality is yours. You have to do it. Engineers are masters of quality if you can. Doctors are not that way, and all other professions do whatever these two professions say. My engineer says something, my mother says something, my grandmother says something, and when they meet together in positive action, all they become power. And that power is very significant one. To check, to control, to understand. बार बार एक बात को कहना भी अच्छा नहीं लगता, लोग बोर हो जाते हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट तो रिक्वायरमेंट है। कौन चाहता है मैं खड़े होना बिना मतलब, और यही देखने जाते हैं कि पानी पीछे आ रहा था या नहीं आ रहा था। और ये अच्छी बात नहीं है तो बुरी बात भी नहीं है। कैसी बुरी बात हो? मैं चाहता हूँ मेरे देश के लोग अभी किसी के कहने में ना आके कहेंगे लोग, अगर आप टाइम पे आएंगे, सोचेंगे, तो आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप सिस्टम जो आप ही ने बनाया है उसको यूज़ करेंगे, उसको अपने साथ लेके चलेंगे, तो आपको ही उसमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। आप ही उसमें माने जाएंगे कि आप इस कमज़ोर व्यक्ति के साथ हैं और आपको इसे आगे लेके जाना है। जब तक आप ऐसा नहीं सोचेंगे, हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्वालिटी हर एक का अधिकार है। वो अधिकार कैसा है आपको मालूम भी होगा, सब मालूम होगा आपको। That is only reason I come every morning, because I want to see persons having quality, not simply person. If you want to worship some God, worship it in concentration, worship it in physique, and do not select only that portion from where भू का वाय आता है. Praise is not enough. Rage is enough. Rage is not enough. क्वालिटी लाना हर एक की ड्यूटी है, जो न ला पाए वो बेवकूफ़। क्वालिटी समझना हर एक की ड्यूटी है। हम क्या चाहते हैं वो भी हमें डिसाइड करना होगा। हम किस प्रकार से एनवायरनमेंट को संभालें, और एनवायरनमेंट से जो भी बीमारियां फैल गई हैं पुराने लिंक से, कोरोना वेरी सिग्निफिकेंट वन, एंड लाइकवाइज मैनी अदर्स, एंड दैट इज स्टीवन वाइकल रॉ। क्वालिटी क्वालिटी करते रहना। लोग कहेंगे बोले जाओ भाई, क्या फ़र्क पड़ने वाला है, हम तो अपना काम ऐसे ही करेंगे। क्वालिटी सिस्टम में 8 पैरामीटर्स हैं, जिसमें 3 ये हिंदी, दूसरी भाषा इंग्लिश, हिंदी सब, और बाकी जो भाषाएं मैं नहीं जानता, मैं नहीं कर सकता, वो भी बहुत हैं। उनको करने के लिए काफ़ी समय लगेगा, समझने के लिए समय लगेगा। वी हैव टू चेक ऑल दिस, वी हैव टू इन्वेस्टिगेट इन टूनीज, वी मूव फार्दर एंड फार्दर एंड फार्दर, and that is where it is very significant to know how we do it. How we do it, we have to know. कैसे करना है, क्या करना है, सब सोचना चाहिए, उसके बिना बात नहीं होती है। और 35 मिनट भी होने जा रहे हैं, आज शायद इतना एक्साइटमेंट नहीं रहा होगा, लेकिन एक ही बात में बात हो जाती है कि क्वालिटी को पहले समझिए, सोचिए कि आपने इसमें कितना ऑलरेडी किया हुआ है,
और वो जब बातें होंगी तो काम करेंगी. I take your leave today, and that is very important point because time is always short. I did not want to take more than 40-45 minutes. It is significant that one has to take care of self, and that is very important one. We have to realize this fact now. जय भारत, जय विश्व. और मैं क्लोज करता हूँ इसको.